Okay, Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing well. So let's get started with October November 2024, paper 6, variant 3. This is IGCSE physics, alternate to practical. So let's start with it. Let's zoom in a bit. Okay. A student investigates. ठीक है भाई एक student investigate कर रहा है the cooling of water in different size beakers. Okay. He uses the apparatus shown in figure 1.1. अच्छा जी आप use कर रहे हो the apparatus shown in figure 1.1. Beaker A and B have graduations as shown in figure 1.1. अच्छा जी बीकर ए की ग्रेजुएशंस हैं 50 सी एम क्यूब 100 सी एम क्यूब बीकर बी की ग्रेजुएशंस हैं 100 सी एम क्यूब 200 सी एम क्यूब 300 सी एम क्यूब ओके रिकॉर्ड रूम टेम्परेचर शोन ऑन द थर्मोमीटर इन फिगर 1.1. आपने रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है बेटा. What will be this room temperature? This is 21, this will be 22. 22 degree centigrade is your room temperature. Describe one technique to use so that the temperature reading is as accurate as possible in this experiment. बेटा कौन सी टेक्निक यूज करें so that the temperature reading is as accurate as possible? What will you say? The line of sight must be perpendicular to the reading to avoid parallax errors. Line of sight. I think this pink looks very weird. Let's use black. Line of sight should be perpendicular to the reading to avoid parallax errors. Simple as that. Let's further move ahead by. The student pours an estimated volume of 75 cm cube of hot water in beaker A. He uses the scale on beaker as a guide. ठीक है भाई beaker की scale आप use कर रहे हो as a guide. Perfect. He puts the thermometer into the water in beaker A and records in table 1.1 the temperature at time t is equal to 0. He records in table 1.1 the temperature of the water in beaker A after every 30 seconds. अच्छा जी beaker A में temperature आप record करो after every 30 seconds. Okay. The student repeats the procedure for beaker B. अच्छा जी beaker B में भी आप water डाल रहे हो then after 30 seconds you are measuring the temperature. Okay. His readings are shown in table 1.1. Yeah, we can see that. Okay. Suggest one possible source of inaccuracy in the procedure even if it is carried out carefully. बेटा वन पॉसिबल सोर्स ऑफ एक्यूरेसी क्या हो सकता है? वन पॉसिबल सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी क्या हो सकता है? कैन यू सी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर 75 सी एम क्यूब ऑन दिस बीकर्स. बेटा आपने अगर 75 सी एम क्यूब मेजर करना है ऑन दिस बीकर्स आपने एस्टिमेट करना होगा. यू कैन नॉट accurately measure 75 cm cube on these bakers क्योंकि 75 cm cube का कोई मार्क ही नहीं है. So you can say 75 cm cube is difficult to estimate on the beakers. 75 cm cube of volume is difficult to estimate on the beakers with large graduation. बेटा बीकर्स पे जो मार्क्स लगे हुए हैं बहुत ही फार अपार्ट लगे हुए हैं. बहुत लार्ज ग्रेजुएशन. डिफिकल्ट टू एस्टिमेट ऑन द बीकर्स विद लार्ज ग्रेजुएशंस. सिंपल. लेट्स फर्दर मूव अहेड. लेट्स सी आगे क्या लिखा हुआ है. राइट अ कंक्लूजन डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द साइज ऑफ द बीकर ऑन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर. बेटा अगर आप बीकर का साइज चेंज कर रहे हो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर. Justify your answer by reference to the values from the result. Now, if you see beaker B क्या है? Large है ना? Beaker B is larger. Okay. Can you calculate the temperature change for beaker B? Initial temperature क्या था? 80. Final temperature क्या है? 63.5.
What will be the temperature change for beaker B? 16.5 degrees centigrade. What will be the temperature change for beaker A? Hanji, 82.5 minus 73. This comes out to be what? Hanji. What does this comes out to be? This comes out to be 9.5 degree centigrade. बेटा बीकर ए का चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है 9.5. बीकर बी का चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है 16.5. बीकर बी इज लार्जर, hence it has a larger temperature change compared to beaker A. लिख लो यहाँ पे. You can say beaker B has a larger temperature change that is of 16.5 degrees centigrade compared to beaker A. That is what? Beaker A का temperature change क्या है भाई? 9.5 degree centigrade. Indicating that the larger the beaker, the greater the rate of cooling. The greater the rate of cooling. बेटा जितना ज़्यादा बीकर होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगी. सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हेयर. आगे बढ़ते हैं. इधर आ जाओ. Student in other schools do the same experiment using identical apparatus. Okay. State one variables that they need to control in order to obtain the reading as close as possible to the reading in table 1.1. बेटा स्टूडेंट इन अदर स्कूल्स आर डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट. कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रखें? द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर. अगर आप दूसरे स्कूल्स में भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर शुड रिमेन कांस्टेंट. सो यू कैन राइट व्हाट, क्या लिख सकते हो? द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड रिमेन कांस्टेंट. सिंपल. आगे बढ़ते हैं बेटा. Calculate the average cooling rate X for beaker B. Use the readings for beaker B in table 1.1. अच्छा जी, average cooling rate निकालना है. Okay. For beaker B. What was the temperature at 0 seconds for beaker B? 80 degrees centigrade. What was the temperature at 180 seconds? 63.5. तो 80 minus 63.5 टाइम क्या है बेटा? 180 seconds. Can you calculate the cooling rate? Yes. 80 minus 63.5 divided by 180. Cooling rate comes out to be what? Okay, what will your answer come out to be? 0.0917 degrees centigrade per second. Simple. Another student thinks that more thermal energy is lost from the surface of water in beaker B than from the sides of beaker B. अच्छा जी, आपके surface of water से thermal energy loss हो रही है. Suggest an additional experiment that she can do with the beaker to test her idea. अच्छा जी, आप क्या एडिशनल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो टू टेस्ट दिस आइडिया? ओके. रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ बीकर बी एंड वन बीकर विल हैव द लिड एंड द अदर विल नॉट हैव द लिड. बेटा आपने जो है एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है विथ बीकर बी एंड एक बीकर के साथ लिड लगा दो, एक बीकर के साथ लिड ना लगाओ. सो यू कैन से repeat the experiment for beaker B with the lid. Okay. Suggest how the cooling rate of water in beaker B in this additional experiment compares with the value of X in E if her idea is correct. बेटा अगर आप लिड लगा दोगे तो क्या होगा? कूलिंग रेट विल रिड्यूस. You can say the cooling rate will half with the lid. You can say the cooling
rate reduces to half of x with the lid. Simple as that. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं बेटा. चलो जी ये देखते हैं. A student determines the resistance of a resistor. अच्छा जी आप resistance of a resistor determine करो. She uses the apparatus shown in figure 2.1. अच्छा जी apparatus in figure 2.1 use हो रहा है. On figure 2.1, draw a voltmeter connected to measure the potential difference across the resistor. You have to connect a voltmeter to measure the potential difference across the resistor. ये आ गया आपका potential difference across the resistor. Okay. The student connects the crocodile clip to measure the resistance to the resistance wire at 100 centimeter mark on the meter rule and measures the potential difference V naught across the resistor. The voltmeter is shown in figure 2.2. Okay. Read and record the value of V naught shown on the voltmeter. अच्छा जी आपने V naught की वैल्यू रीड करनी है और रिकॉर्ड करनी है. दिस कम्स आउट टू बी 3.2. दिस कम्स आउट टू बी 3.2 वोल्ट. सिंपल. आगे बढ़ते हैं बेटा. क्या लिखा हुआ है. The student moves the crocodile clip to a length of resistance wire L is equals to 20 centimeter. Okay. Read and record in table 2.1 the current for L is equals to 20 centimeter shown on the ammeter in figure 2.3. Current record करना है अब. What will this value of current be? This will be 0.1 halfway में 0.12, 0.4, 0.16, 0.18. Simple. तो करंट की रीडिंग रिकॉर्ड कर दो 0.18 एम्पेयर. ओके. अच्छा जी अब क्या कर रहे हो स्टूडेंट. The student measures the current for the length of resistance wire L is equals to 30 centimeter, 40 centimeter, 50 centimeter, 60 centimeter. Her readings are shown in the table 2.1. अच्छा जी ये readings आपको shown है. Perfect. You have to plot a graph of length on the y-axis, current on the x-axis. Draw a line of best fit. You need not to start the graph from the origin. अच्छा जी origin से आपने start नहीं करना. तो first of all तो हम mark कर देते हैं. What are we plotting on the y-axis? Geniuses. Length. Okay, so length slash centimeter on the y-axis. What are we plotting on the x-axis? Geniuses. Current slash ampere. Okay. अच्छा अब थोड़ा सा गौर करेंगे. आई वॉन्ट यू टू फोकस अ बिट. ठीक है. अच्छा वाई एक्सिस में हम लेंथ मार्क कर रहे हैं. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ लेंथ 20. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथ 60. परफेक्ट. व्हाट आर द नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस on the y-axis? 1, 2, 3, 4, 5 and 5.5. The number of large boxes on the y-axis is 5.5. y minimum 20 है, y maximum 60 है. y का स्केल कैसे निकालेंगे भाई. वेरी इजी. y maximum minus y minimum नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड कर दो. y maximum क्या है बेटा 60. y minimum क्या है 20. नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है 5.5. बताओ आंसर क्या आएगा. 40 डिवाइडेड बाय 5.5. Answer comes out to be 7.27. But always remember we don't plot such odd scales. हम ऐसे odd scales नहीं plot करते. We plot scales in the multiples of 1, 2, 5 and 10. So we will round up this value. हम 10, 10 की values plot करेंगे. And we can start from the value of 20. तो इसको हम erase कर सकते हैं like this. Let's start with the value of 20, 30, 40, 50, 60 and 70. I think that will do the job. अच्छा जी x axis पे देख लो 1 2 3 4 and 4.5 if you want to say. तो आपके x axis पे कितने large boxes हैं 4.5. okay. What is the minimum value on x axis 0.18. maximum value क्या है 0.48. तो x axis का स्केल किस तरह निकालोगे बेटा. Maximum value that is 0.42, minimum value that is 0.18 divided by
4.5। बेटा अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। आई होप यू गाइज हैव सीन द प्रीवियस वीडियोज एज वेल, जहाँ पे मैंने ये सारा सिखाया है कि स्केल कैसे निकालना है। 5.4.5 सॉरी, दिस कम्स आउट टू बी 0.053। Your value comes out to be 0.053. अब obviously we do not plot these odd scales। हम odd scales नहीं प्लॉट करते, हम स्केल प्लॉट करते हैं इन द मल्टीपल ऑफ 1, 2, 5 एंड 10। तो आप क्या कर सकते हो बेटा? व्हाट कैन यू डू? यस, व्हाट कैन यू डू हियर? क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? यू कैन राउंड दिस अप। आप कह सकते हो दिस इज 0.1। कैन वी प्लॉट मल्टीपल्स ऑफ 0.1? यस, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 0.1 प्लॉट कर देते हैं। दिस विल बी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। आई गेस दैट वुड बी इनफ। ठीक है, अब प्लॉट करते जाओ। जब y एक्सिस पे 20 है, x एक्सिस पे 0.18 है, तो y एक्सिस पे 20, x एक्सिस पे 0.18, दैट इज हेयर, दैट इज दिस पॉइंट। अच्छा जी, जब आपका y एक्सिस पे 30 है, x एक्सिस पे 0.22। अच्छा जी, ये 0.22 यहाँ पे आ गया, दिस थिंग, परफेक्ट। देन जब आपका y एक्सिस पे 40 है, x एक्सिस पे 30, 0.3 सॉरी, 40 एंड 0.3 somewhere here, okay। What else do we have? 50 and 0.39, 0.39 तो यहाँ पे होगा, 50 यहाँ पे आ गया, perfect। What else do we have? 60 and 0.42, 60 and 0.42 तो यहाँ पे आ गया। Okay, so how many points do we have actually? एक दो तीन चार पाँच, we have 5 points। Whenever you have 5 points and you have to draw the line of best fit, option 1 क्या होता है बेटा? जब भी आपके पास 5 पॉइंट होते हैं and you have to draw the line of best fit, what is your first option? Make sure all points on the line। पहले आपने क्या ट्राई करना है? आपने कोशिश करना है कि क्या किसी तरह मैं सारे पॉइंट्स लाइन पे ला सकता हूँ। नो, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर आप सारे पॉइंट्स लाइन पे नहीं ला सकते, व्हाट इज योर सेकंड ऑप्शन व्हेन यू हैव 5 पॉइंट्स? व्हाट इज योर ऑप्शन नंबर 2 व्हेन यू हैव 5 पॉइंट्स? हाँ जी, व्हेन यू हैव 5 पॉइंट्स योर सेकंड ऑप्शन इज 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन, 1 पॉइंट above the line, 1 point below the line। अच्छा जी सर, ऐसा हो सकता है क्या? इज दिस इवन पॉसिबल? लेट्स सी। या, दिस इज पॉसिबल। कैन यू रियलाइज 3 points on the line, 1 point below, 1 point above? Perfect line of best fit has been drawn। Okay. Calculate the gradient of the graph, show clearly on the graph how you obtained the necessary information। अच्छा जी, necessary information हमने कैसे grab करनी है? First of all, let's take 2 points। पहला पॉइंट तो हम ये ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस वाला पॉइंट। एक्स एक्सिस में दिस इज 0.18, वाई एक्सिस में दिस इज 20। व्हाट विल बी योर सेकंड पॉइंट? हाँ जी, ये ले लेते हैं। लेट्स मेक श्योर दैट द पॉइंट्स आर मैक्सिमम फार अपार्ट। एक्स एक्सिस में दिस इज 0.4, वाई एक्सिस में दिस इज 57। ओके, सो लेट्स मार्क द पॉइंट्स। 0.18 slash 20, 0.4 slash 57। Can you calculate the gradient? This is x1, y1, x2, y2। Can you calculate the gradient? Yes, y2 minus y1 over x2 minus x1। y2 की वैल्यू क्या है बेटा? 57। y1 की वैल्यू क्या है? 20। x2 की वैल्यू क्या है? 0.4। x1 की वैल्यू क्या है? 0.18।
What does your answer comes out to be? This comes out to be 0.4, 0.18. This comes out to be 168 as your gradient. According to three significant figures, your gradient is 168, nothing less, nothing more. Now, जब भी आपने gradient निकालना है बेटा, whenever you have to calculate the gradient, आपने ये दो पॉइंट्स तो मार्क कर दिए, बट यू ऑल्सो हैव टू शो अ ट्राइंगल. इस तरह से आपने ट्राइंगल भी शो कर दिया. यू शो अ ट्राइंगल लाइक दिस. ठीक है, आपने बता दिया एग्जामिनर को ये दो पॉइंट्स हैं, दिस इज योर ट्राइंगल, सिंपल, दिस इज योर ग्रेडियंट. ओके, you have to calculate the resistance is equal to gradient, that is 168 into the voltage. V नॉट क्या आ रहा था भाई आपका? 3.2. ओके, 3.2 डिवाइडेड बाय 100. के की वैल्यू क्या है? 1. सो रेजिस्टेंस आ जाएगी 168 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 100. Resistance comes out to be 5.376. Let's round it off till three significant figures. 5.38 ohms is your resistance. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आपकी रेजिस्टेंस क्या हो गई? 5.38 ओम. चलो जी आगे बढ़ते हैं. Suggest one practical reason why other students might not be able to obtain the same result as this student even though they perform the experiment carefully. बेटा अगर आप एक्सपेरिमेंट केयरफुली भी परफॉर्म करते हो तो भी शायद आपका ये रिजल्ट ना आए. वाई? बिकॉज द क्रोकोडाइल क्लिप्स माइट बी कनेक्टेड inappropriately, या ये कह सकते हो कि crocodile clips might not be connected correctly. You can say the crocodile clips might not be connected correctly. The resistance wire can become very hot during this type of experiment. Suggest one change to the apparatus that prevents this. बेटा अगर आप चाह रहे हो कि आपका रेजिस्टेंस वायर ज़्यादा हॉट ना हो, what can you do? Reduce the EMF of the power supply. Reduce the EMF of the power supply. Let's further move ahead बच्चों, आगे बढ़ते हैं. A student investigates the refraction of light by a transparent block. He determines a quantity known as the refractive index of the material of the block. अच्छा जी, refractive index of the material of the block बनाना है. The student's ray trace sheet is shown in full size in figure 3.1. अच्छा जी, ये 3.1 में आपको ट्रेस गिवन है. ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम. The student places a transparent block ABCD near the center of the ray trace sheet as indicated in figure 3.1. अच्छा जी, आपने ये transparent block place किया है as 3.1 shows. Okay. Draw a normal to point N extending the line above AB. Label the upper end of the normal with letter L. अच्छा जी, नॉर्मल बना देते हैं यहाँ पे. Now always remember normals are 90 degree lines and they are dotted. तो अब मैं इसको डॉटेड करने के लिए थोड़ा सा छोटू सा इरेजर ले लिया. ये नॉर्मल को आपने डॉटेड कर दिया. परफेक्ट. What else do you have? Extend the normal downwards until it crosses CD. Label the point at which it crosses CD with letter F. अच्छा जी, नॉर्मल को एक्सटेंड करना है. हाउ शुड, ओ हो, सबर सबर सबर. या आई थिंक इतनी एक्सटेंशन विल बी, ओहो, या आई थिंक आई हैव डन ना, मेड अ मिस्टेक हियर. अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग. ऐसे हो जाएगा, ठीक है. एंड लेट्स मेक इट डॉटेड अगेन बिकॉज दिस इज अ normal, so it should feel like a normal.
अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या लेबल कर देना है, दिस पॉइंट इज एफ। ओके, सो ये आ गया आपका पॉइंट एफ। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम्स। द स्टूडेंट draws the line EN as shown in figure 3.1. Perfect. On figure 3.1, measure the acute angle theta 1 between the line LN and EN. अच्छा जी, LN और EN. Okay, so we have to measure this angle theta 1. How will we measure this angle theta 1? बेटा प्रोट्रैक्टर यहाँ पे प्लेस करो. Make sure that the middle of the protractor is at point N. बेटा यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मिडल ऑफ द प्रोट्रैक्टर कहाँ है, एट पॉइंट एन। मेजर दिस एंगल थीटा वन। आपने मेक श्योर करना है कि प्रोट्रैक्टर का मिडल कहाँ है, एन पे है, एंड मेजर दिस एंगल थीटा वन। आई हैव ऑलरेडी मेजर्ड दैट फॉर यू गाइस। दिस एंगल कम्स आउट टू बी 15 डिग्रीज, तो इसको यहाँ पे लिख दो। द एंगल कम्स आउट टू बी 15 डिग्रीज। परफेक्ट। The student places two pins P1 and P2 on line EN as shown in figure 3.1. Measure the distance between P1 and P2. अब आपने क्या मेजर करना है बेटा, ये डिस्टेंस between P1 and P2. I have again already measured this using a ruler. आपने ये रूलर से मेजर करना है. This comes out to be 3.5 सेंटीमीटर. सो ये भी लिख देते हैं, 3.5 सेंटीमीटर. ओके. Suggest whether the two pins are a suitable distance apart for accurate ray tracing. Explain your answer. भाई ये suitable distance apart है या नहीं? No. The separation is not suitable. Why? Because the pins should be as large as possible apart. बेटा pins जो हैं should be as large as possible apart. At least 5 centimeter apart तो होनी चाहिए. The separation should be as large as possible. So the separation is not suitable, you can say. Separation is not suitable. Why? Because the separation between the pins should be as large as possible. Simple. आगे बढ़ते हैं. The student views the image of P1 and P2 through the block. He places two pins P3 and P4 so that P3 and P4 and the images of P1 and P2 all appear exactly one behind the other. Draw a straight line through P3 and P4. Extend the line to cross NF. अच्छा जी, P3 और P4 के थ्रू आपने एक लाइन बनानी है. Extend the line to cross NF. Allahu Akbar. I don't know what the examiner is trying to do here. Let's extend the line. Yeah. Yeah, I have extended the line to meet NF. This is like a cooking recipe. I have no idea what the examiner is trying to do, but we are just following him. ठीक है, extend this line to meet NF. Okay. Label the point at which this line meets NF with letter G. अच्छा जी, इसको हमने कैपिटल जी से लेबल कर दिया. Perfect. What else is the examiner saying? Label the point at which the line crosses CD with letter H. अच्छा जी, इसको हमने H से लेबल कर दिया. Perfect. Join points H and N with a straight line. हाँ जी, H and N with a straight line. Okay, I think ये चीज हो रही है. I myself am confused. What is he trying to do here? Oh, I get it. I get it. I think I get it. Okay, you have to complete H and N. Okay, we have done that. Okay, perfect. Perfect. Nothing is left. Let's move ahead. Measure the length A of line HN. अच्छा जी, आपने HN
की लेंथ मेजर करनी. Which length do you have to measure? Let me. Yeah, you have to measure this length hn. So I have already done this using a ruler. Let's write it down. The length of hn, a comes out to be what? 6.1 centimeter. ये आ गई बच्चे 6.1 centimeter. Now you have to measure the line एच जी. अच्छा जी, एच जी क्या है भाई? एच जी क्या है? ओह, this is starting to make sense. You will measure the line एच जी now. Okay, एच जी भी मैंने ऑलरेडी मेजर कर ली है. This comes out to be what? This comes out to be 4.2 centimeter. The refractive index is equals to A over B. A is 6.1, B is 4.2. Refractive index अगर आप कैलकुलेटर में पुट करोगे, this will come out to be 1.5. Simple. Okay, now what else is written? The student represents the above procedure. The student repeats the above procedure for an angle theta 2, that is 40 degree. Okay. He places two pins P5 and P6 so that the pins P5 and P6 and the images of P1 and P2 all appear exactly one behind each other. Draw a line through P5 and P6. Extend the line until it meets GH. अच्छा जी, P5 P6 कहाँ है भाई? अच्छा, GH कहाँ है? ओके, GH इज दिस पिंक लाइन. ओके, रिमेंबर ये GH क्या है? पिंक वाली लाइन है. मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ थोड़ा सा. ओके, GH इज दिस पिंक वाली लाइन. We have to draw. Okay, we have to draw a line through P5 and P6 until they meet GH. 1 second. I think, yeah, ये बना दी हमने line. This is a very complicated diagram. I hope students got this one correct. Label the point at which this line meets GH with K and where it passes CD with R. Okay. So this is K. This is R. Perfect. Okay. Measure the angle alpha, where alpha is the acute angle between RK and GH. अच्छा जी, RK और GH के बीच में आपने एंगल निकालना है. Okay, I think, yeah, this K मैंने गलत मार्क किया था. 1 second, let me rectify my mistake. Okay. K is the point where the line through P5 and P6 meets GH. This is your K. Now you have to measure the angle between RK and GH. So you have to measure this angle. This angle. You have to measure the angle between GH and RK. है ना, हमने यही एंगल मेजर करना है. लेट मी रीड दिस अगेन. यू हैव टू मेजर द एक्यूट एंगल बिटवीन आर के एंड जी एच. या ये आर के और जी एच के बीच में एंगल मेजर करना है. दिस एंगल इज अल्फा. ओके, सो हाउ विल यू मेजर दिस एंगल? टू मेजर दिस एंगल आपने अपना प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखना है. मेक श्योर इट अलाइंस विथ जी एच and measure this angle alpha. I have already measured this angle. This comes out to be 23 degrees. Alpha किसके इक्वल आ रहा है भाई? 23 degrees के इक्वल आ रहा है. Let's write it here. Okay, another student suggests that the angle alpha should be equal to the difference between theta 2 and theta 1 from A part 2, E part 1. Okay. अच्छा, अल्फा हमारा क्या आ रहा है? 23 डिग्रीज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा 1? 1 second, लेट मी सी. थीटा 2 आपका क्या था? 40 डिग्रीज. व्हाट वाज थीटा 1? थीटा 1 वाज 15 डिग्रीज. सो 40 minus 15, this comes out to be 25 degrees. The student is saying this 25 degrees should be equal to the alpha, that is 23 degrees.
Justify your answer. Okay, so let's calculate the percentage difference between the two values. 25 minus 23 divided by the average multiplied by 100. How will we calculate average? 25 plus 23 divided by 2, that is 24. Percentage difference क्या आ जाएगा? 2/24 into 100. I think they are equal. They are justifiable. Yeah. The percentage difference comes out to be 8.3%, which is less than 10%. Hence, both the values are equal. So you can say, yes, they are equal. And why are they equal? Because both the values are within 10% of each other. Yeah, both the values are within experimental accuracy. ठीक है, within the limits of experiment, are within the, hence they are within the limits of experimental accuracy. Simple. Nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं बेटा. Suggest one technique used in this experiment to ensure results are accurate. कौन सी टेक्निक यूज करेंगे हम? Make sure to align the pins from the base. तो ये लिख लो. For alignment of pins, look at the base of the pins. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. For the alignment of pins, look at the base of the pins. आगे बढ़ते हैं. A student investigates the speed of a small trolley moving down a sloping ramp. Okay. Plan an experiment which will enable her to compare the effect of different angles of slope on the average speed of the trolley. भाई आपने डिफरेंट एंगल्स ऑफ स्लोप को कंपेयर करना है विथ एवरेज स्पीड. मतलब आपने डिफरेंट एंगल्स पे एवरेज स्पीड निकालनी है. सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ओके. एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला. आपने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ऑफ स्लोप यूज करने हैं और एवरेज स्पीड निकाल. A long ramp with a support that enables it to be set at different angles of slope. अच्छा जी, आपके पास एक स्मॉल ट्रॉली है, एक लॉन्ग रैम्प है. ओके. List any additional apparatus that you need. Obviously, you will need a meter rule to measure the distance. You will need a stopwatch to measure time. और बेटा आपने अगर एंगल मेजर करना है तो you will also need a protractor. So first of all, let's write everything down. A meter rule will be needed to measure distance. Stopwatch will be needed to measure time, will be needed to measure time, and protractor will be needed to measure the angle. To measure the angle. अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Let's see. Explain briefly how to do the experiment, including how to take measurement so that the average speed can be determined. अच्छा जी, अब आप experiment किस तरह करोगे? First of all, ये जो आपके पास लॉन्ग रैंप है, इसको आप एक नोन एंगल पे सेटअप कर दो. First of all, set up the long ramp at a known angle and measure this angle using a protractor. ये एंगल आपने मेजर कर लिया using a protractor. Okay, perfect.
देन व्हाट विल यू डू? हाँ जी, लॉन्ग रैंप ले लिया आपने, मेजर कर लिया द एंगल यूजिंग द प्रोट्रैक्टर। व्हाट विल यू डू देन? क्या करोगे फिर? देन you will release a trolley from the lamp, measure the distance traveled, measure the time taken, divide कर दो to calculate the average speed। ठीक है, डिवाइड कर दो टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ओके, तो यहाँ पे यू कैन से tilt the ramp at a known angle theta and release the trolley फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। बेटा ट्रॉली को आपने हमेशा एक सेम पॉइंट से रिलीज करना है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मेजर द डिस्टेंस traveled by the trolley using a meter rule and measure the time taken using a stopwatch। अच्छा, उसके बाद आप क्या बताओगे? हाँ जी, what will you say? Apply the formula average speed is equals to total distance upon total time to calculate the speed, yeah, the average speed। Now, what further you will say? Repeat the experiment for at least 5 different angles. Repeat the experiment for at least 5 different angles। अच्छा जी, उसके बाद क्या बताना है आपने? Suggest a possible source of inaccuracy even if the method is carried out carefully। अच्छा जी, inaccuracy यहाँ पे क्या हो सकती है? Difficult to time the trolley, ठीक है। डिफिकल्ट टू टाइम द ट्रॉली, रैम्प का सरफेस इज नॉट रेगुलर। हो सकता है आपका रैम्प का सरफेस क्या हो? रफ हो, ऊपर नीचे हो, or that varies the distance, that varies the motion of the trolley, so you can say the trolley might be difficult to time accurately and the ramp surface might also not be regular। रैम्प का सरफेस भी क्या होगा? इरेगुलर होगा। सो दैट्स अ सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी, डिफिकल्ट टू टाइम एज वेल। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव टू टेल? की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रखनी है? द टाइप ऑफ ट्रॉली शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू रिलीज द ट्रॉली, द स्टार्टिंग पॉइंट शुड रिमेन सेम। तो ये सारी चीज़ें लिख दो। द टाइप ऑफ ट्रॉली and the starting point for the experiment should remain same throughout, should remain same throughout।
Lastly, you have to draw a table. बेटा अब आपने टेबल ड्रॉ करना है. How will you draw a table? Easy peasy. टेबल में आप क्या क्या ड्रॉ कर दोगे बच्चे? You will see. Table में what will you put? You will say angle slash degrees. Then you will have distance slash meters. Then you will have time slash seconds. Then you will have average speed. Simple slash meters per second. Okay. Then you have to give a conclusion. Conclusion किस तरह दोगे? Draw a graph of angle of slope against average speed to see whether angle affects the average speed or not. तो ये भी आगे लिख देना to see if angle affects the average speed or not. Simple. So I think that will be it for today. If you have any questions, you can ask right away.